Assalamu alaikum student. How are you? I hope so. You are fine. Welcome from Bahriya Model School, PNAD Maripur. My good name is Miss Noor and this is my second video of English. So student, message of the day is always wash hand before you eat meal. Today I will teach you grammar portion. What is noun? Everything around us has a name. So noun is the name of person, place and thing. There are so many people around us. All of them have names. Boy, teacher, woman, farmer. All these persons have names, so they are noun. Some things around us: pen, chair, football, and bag. These things have name, so these are called noun. Some places around us are park, mosque, hospital, office. These places have name, so these places are called noun. Types of noun. There are 4 types of noun. First, countable noun. Second, uncountable noun. Third, proper noun. And fourth is common noun. Countable noun. Countable nouns are words which can be counted. काउंटेबल नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चेयर्स, टेबल्स एंड बुक्स. Uncountable nouns. Uncountable nouns are words which cannot be counted. अनकाउंटेबल नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, वाटर, चीज. कॉमन नाउन. A common noun is used to name general things, places, ideas, events or people. कॉमन नाउन आम चीज़ों के लिए, आम मकामात के लिए, आम ख्यालात, वाक़यात और लोगों के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, पीपल, अली, Ahmad, Sarah, etc. Example of common thing is bag. Example of common place is house. Proper noun. Proper noun is a name that identify a particular person, place or thing. प्रॉपर नाउन एक नेम है यानी नाम है जो कि आइडेंटिफाई करता है मखसूस शख्स की, जगह की और चीज की. एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकुलर पर्सन इज कायदे आजम. Example of particular place is Minar-e-Pakistan. Example of particular thing is Hajr-e-Aswad.
Your home task is learn definition of noun and their types. Make grammar portion in your English copy and write definition. आपका घर का काम ये है कि आपने नाउन की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स याद करनी है। उसके बाद आपने इंग्लिश की कॉपी में अलग से ग्रामर पोर्शन बनाना है और उसमें नाउन और उसकी जितनी भी मैंने टाइप्स बताई हैं उसको लिखना है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिसमें ये तमाम डेफिनेशन लिखी हुई है। I hope so you understand my lecture. So see you soon.